Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So this is a quick video explaining the WSTG Web Security Testing Guide. इसमें आप लोग क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे. अब इसकी बहुत सारी छोटी छोटी लैब्स हैं जो हमने बनाई हैं, डिज़ाइन की हैं. एंड द होल आइडिया इज़ कि आपको अच्छे तरीके से तमाम जो मेथडोलॉजी है जो दुनिया में तमाम बग बाउंटी हंटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिस पे काम करते हैं, वो सब आपको सिखा दी जाए, आपको बता दी जाए. राइट, इसका ये मकसद है. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू कवर मैनी आइटम्स. बहुत सारे आइटम्स हम कवर करेंगे. ठीक है. सो होगा ये कि देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको रीड करना है. जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन. इफ़ यू ओपन दिस इंट्रोडक्शन यू विल सी व्हाट आर द की एलिमेंट्स. ये ओवास का टेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है, why do we need it, controlling software projects management. This is a very good, measuring security, the economics of insecure software. This is a very very basically I would say एक अच्छी बुक है जिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. राइट, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. लिस्ट प्राइस इज़ प्रीटी चीप. यू कैन बाय दिस बुक. आई मीन ग्लोबली आपको मिल सकती हैं, यूज बुक्स में मिल सकती हैं, मार्केट प्लेस से मिल सकती है. You should read this thing. ये पढ़ें आप. This is a 1986 book, but still it is true even today. You can't control what you can't measure. This is the most famous tagline from this book, right? And security testing is no different. Unfortunately, measuring security is a notoriously difficult process, and this is true even today, and it will be true even after 20 years from now. 20 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे, it will be the same thing, right? So this is a good software. This is a good book about software. The cost of poor quality software in the US is in 2018 is approximately 2.84 trillion. Now imagine कि we have now blockchain. 2.84 trillion है ना. अगर blockchain को देखा जाए तो blockchain में जो losses अभी तक हुए हैं, that's in billions and billions of dollars, right? So if you make one mistake in blockchain, imagine what will happen on that front, on most of these fronts. Anyway, so it mentions about many things कि टेस्टिंग क्या चीज़ है, परफॉर्म टेस्टिंग क्यों की जाती है, किस टाइम पे टेस्ट किया जाता है. आई मीन एट द टाइम्स ऑफ डेफिनेशन एंड देन डिज़ाइन, डेवलप, डिप्लॉय एंड मेंटेन, एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल. राइट. सो SDLC. नाउ आई विल बी कवरिंग मैनी अदर मेथडोलॉजीज एज पार्ट ऑफ द CSSLP जो कि हम लोग DevOps के ट्रैक में पढ़ा रहे हैं. एंड विल बी कवरिंग मैनी थिंग्स इन द DevOps ट्रैक बिकॉज DevOps इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. बट at the end of the day, दुनिया में आप जितनी चीज़ें हैं, everything relies on softwares, right? So softwares के अंदर दुनिया में जितने भी softwares हैं, pretty much these are the same things that you have to look into. और यही सारी चीज़ें आप लोग ढूंढते हैं और इसके ऊपर hunt करते हैं, right? Now this is a good read. Please read it, understand it. This talks about many things. Risk level कैसे है, क्या है, and windows of vulnerability क्या होता है, जिस टाइम पे vulnerability discover होती है. Vulnerability is known in the to the vendor. Vulnerability is made public. A security vulnerability is discovered, and from the risk level from here to here, when it is discovered, this is the time frame you have before it is made public. आप उसको exploit कर सकते हैं. And if you don't make it public, then it will people can keep on exploiting it, और लोग उसको exploit करते चले जाते हैं. Right. Vulnerability is known to the vendor notifies its clients, and it keeps on going, and then there are tools and signatures. So you can see जब तक made public होती है और जब तक उसके signatures उसके वो आते हैं, just look at the just the detection mechanism, it takes a long time. Then patch publish होता है, patch आता है, patch install होता है. So you can see कि organization में अगर कोई major चीज़ आए, it takes them months before they can even patch anything. So that's the key thing that you need to understand. So SDLC is the king. दुनिया में जितनी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, they are only developed for convenience. Many vendors. अगर दुनिया में 1000 vendors हैं, 990 vendors, 1000 developers हैं. There are 1000 developers, right? 990 developers ऐसे होंगे जिनको जो सॉफ्टवेयर सिक्योर कोडिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल के अंदर सिक्योरिटी की इंटीग्रेशन है, they don't know it. And even today, many of the top universities इसको पढ़ाते नहीं है, right? So this talks about all the key things. This is the 27034 standard. ये स्टैंडर्ड जो है आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करता है. अगेन
a very good standard to read. This is still applicable. ये अभी भी आपको दुनिया में मिलेगा. You can still find the standard as of right now. If you search it online, you'll be able to see when were the last changes that were being made. आप इसको देख सकते हैं. 27034 version 5 अब आ चुका है. 2017 was the last iteration, right? So you can find के protocols and application security controls and data structure. और ये अभी भी you can see के what stage at it is right now. This is it was reviewed under publication and it is published right now. So there is no review going on. इसका कोई review नहीं है. There is no withdrawal. This is still active. You can find the standard. I would suggest please read the standard if you can. Now normally इस standard को अगर आपने buy करना है, you have to pay like something like Swiss franc $138, 138 Swiss franc something CHF. But you can read the standard on this website known as the pdfcoffee.com. You should be able to read this website. Just search online IEC 27034 section 5 2017 and citation preview. You'll be able to see the standard and you can review the whole standard over here. It is available and you can review it. And you can download it if you want. And in my view, these should be available to read anyway to anyone, so that they can benefit. These standards are very, very helpful, and they should be made public for an open source purposes, so that more secure applications can be developed around the world. ताकि हम ज़्यादा secure applications बना सकें, design कर सकें, so on and so forth. So anyway, we can go back and test early and test often. ये जितनी findings हैं यहाँ पर, test automation, the CI/CD pipelines. This is the biggest problem because infrastructure as a code is changing the whole landscape. अब जो दुनिया में सारा infrastructure है, even उसको भी as a code manage किया जा रहा है. So this is becoming more and more difficult, right? So static application security testing and dynamic application security testing are the biggest challenges जो अब organization face कर रहे हैं. This is our upcoming track. ये हम लोग track लेकर आ रहे हैं. There are some changes. We are still looking into 5th step commercial tools. However, this will be available in February 15th, 2022. ये available होगा and we will keep on adding and subtracting new stuff whatever we can. But this is a huge DevOps tool basically set. DevOps ka advancement track, DevSecOps advancement track. We are calling it Dev and SecOps both. So this covers applied DevOps. This is all 4th step, applied DevOps deep dive into all the tools. Okay, into all the tools, and then we have the CSSLP certification, the Certified Software Security Lifecycle Professional Certification preparation. We will do that. We will cover that, and then it also covers all the key labs जो हैं दुनिया में जो चलती हैं, all the tools, and then there are some different labs all in like stage 1, stage 2, 3, and 4, which covers the practitioner, the expert, the architect, all kinds of areas for the DevSecOps, right? So अगर आप CAD कर रहे हैं, and if you do all of these things, you'll be fully prepared to handle all of these things in a proper fashion, inshallah, right? So ये मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगा कि DevOps के बाद अगर आपने वाकई में CAD के बाद अगर आपने वाकई में penetration testing में जाना है, then the whole DevOps is vulnerable, the whole network is vulnerable, all the applications are vulnerable. You just have to hunt for the right things. Automation is the biggest key. Understanding the scope of security, that is again very, very important. कि क्या security का scope है, what directive you have to follow, develop the right mindset, understand the subject, use the right tools. The devil is in the details. This is the most important thing, right? Use source code when available. Develop matrices. Again, you have to develop the CMMI, capability maturity model matrices, to measure and document the test results. Again, key thing. Techniques, testing techniques आपकी कौन सी हैं? Manual inspection है, threat model है, code review है, penetration testing है. Manual inspection review कौन से आप दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके advantages, disadvantages क्या हैं, and then it comes into threat modeling, right? So this goes into a lot of details. So if you go up, and you'll be able to see like the whole introduction, to
It covers many things. So it covers the testing project, the principle, the techniques, the code review, the penetration, the threat modeling. ये सारे key areas हैं. So you have to read them, read about them. We will give you all the hands-on area, but you have to read all of these things in further details. This is the most important aspect. Reading, 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 analyzing, 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 and keep on practicing. This is what makes the best bug bounty hunters out there. जो दुनिया के सारे जो bug bounty hunters हैं ना best, वो इस तरह से काम करते हैं. OWASP की टेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात है. I mean, you have to read about this. The testing framework कैसे काम करता है, what are the key elements, कौन से key elements हैं, so on and so forth. So all of these things are also covered in detail in here as well. So in the DevOps track हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि आपको इस काबिल बना देगी कि आप एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर के अलावा DevOps में और SecOps में भी काम कर सकते हैं. लेकिन उसको समझना, द रोल ऑफ ऑटोमेशन को समझना उसके लिए ज़रूरी है. ठीक है. सो यहाँ पर जो शुरू में जो 3 सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब की सब जो हैं आपकी पढ़ने लिखने की हैं. आपको रीड करना है, अपनी मल्टीपल ज़बानों में आप उसको रीड करें. ट्राई टू कॉपी इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करें एंड ट्राई टू रीड इट. वी विल बी कवरिंग मोस्ट इफ़ नॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रू आउट द कोर्स. हम इस सब को कवर करेंगे. नाउ WSTG की लैब्स जो हैं वो सेक्शन 4 से शुरू होती हैं. एंड एवरी वीक वी विल कीप ऑन गिविंग यू न्यू लैब्स. एवरी वीक 2 वीक्स हम आपको नई नई लैब्स रिलीज़ करते रहेंगे, आपको मिलती चली जाएंगी एंड यू विल कीप ऑन यूजिंग दैम इंशाअल्लाह. ओके. सो ये आपके लिए क्विक इंट्रोडक्शन था. ओपन VPN क्लाइंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है. ओपन VPN क्लाइंट जो इस वक्त आपको दिया गया है, बट लेटर डाउन द लाइन वी विल सी इफ़ यू विल कंटिन्यू टू यूज़ द ओपन VPN क्लाइंट और विल वी जो है ना हम लोग will we be able to put something within the browser like the whole Linux and should be able to use it as well. So we will see कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं इंशाअल्लाह. ओके. सो ये आप लोगों के लिए है एक इंट्रोडक्शन. स्टार्ट करें. वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड is very important. You will learn all the key areas like for example information gathering. अगर आप देखें इसके जो objectives हैं, introduction and objectives, if you click on section 4 you will see सेक्शन 4 में ये सारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं. और इफ़ यू रियली वांट टू बिकम द वर्ल्ड बेस्ट बग बाउंटी हंटर्स, दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेस्ट. चाहे वो क्लाउड में हो, चाहे वो डेटा सेंटर में वेब एप्लीकेशंस हों, as long as they are working and they're running on the web, these are the things you have to do. Now for the mobile security testing guide, for the mobile security, there's a separate guide known as mobile security testing, MSTG. We will cover that separately. And then for the firmware IoT के लिए उसके लिए एक अलग टेस्टिंग है and we will cover that separately as well. So अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पेन टेस्टिंग का ब्रेकडाउन क्या है, क्विक वर्जन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो है वो वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड. अगर वेब है तो वेब एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, फर्मवेयर हो सकता है एंड नेटवर्क पेन टेस्टिंग हो सकती है. नाउ दीज आर द 4 की एरियाज. एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलाइज ऑन दीज की फीचर्स. हम इसके ऊपर मज़ीद आगे इस पे काम करेंगे. बट फॉर नाउ you have to go through all the key definitions, all the key understandings, and we will keep on covering all the key areas for you. आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको देखिए, and inshallah